Welcome to the oldest village of Rajasthan. This is Rusi Rani village, a village rich in culture, traditions, and history. Getting to this village is by no means an easy task. We started our journey quite early into the day. We headed out from Jaipur towards Tehla, which is about 70 kilometers from Jaipur, and took us around 2.5 hours. From Tehla, you have to organize this trip with Mr. Girdhar. We were also really lucky to meet his lovely wife Pinky and their sweet son David, who guided us throughout our day in the village. Road that we are on, this road goes to Bangar, the haunted historical site. I did want to visit here, but I don't know if we'll be able to manage with our timings. So let's see if we have a bit of time to kill. Maybe I'll take a quick stroll around the place. We are bang next to Sariska Tiger Reserve, so we have stopped here for breakfast. This is the Sariska Tiger Reserve. This place called Green Valley Cafe. Pretty nice cafe. Nice swimming pool also there. Whoever wants to take a dip. Got some sandwich here. My mom got aloo paratha, but that's not here, so she's eyeing my sandwich. We're also waiting for a coffee. After a quick pit stop for breakfast, we decided to go to our meeting point before we started our journey towards the village. Imagine living in a place where people still are tied to their ancient roots, where people still exist without technology, there's no electricity, and it's almost as if we've been transported back in time. This village is so old, and even the mention of which, even in the Mahabharata, it's said that the Pandavas came here and called this place their abode, and they stayed here before venturing out for the ultimate war, which is why even a Nilkant temple is here that was constructed to take the blessings before the war. So right now I'm standing at the meeting point of Rusi Rani village, and I think there is also some folklore related to the Queen of Alwar who stayed here, and that is why the name came Rusi Rani, like Rusi means upset Rani. I'll ask about that from my guide. I'm standing at the meeting point, which is Sri Dev Narayan Dham, and also this is called the Moti Mahal Mandir. This place is about 77 kilometers from Jaipur. It's called Tehla. So once you're close to Tehla, you have to follow your Google map location, and there's gonna be a steep way that takes you to the Moti Mahal temple complex where we are stood right now. So our guide Mr. Girdhar is gonna come pick us up, and you cannot do this village tour without his help, because he's gonna provide with so much valuable information that I might not know about. He's gonna pick us up from here in another 15-20 minutes, and then we'll head to the village, and obviously I'll ask him to let you guys know more about this village. But I'm super excited. I've been trying to organize this tour since months, and I'm so glad I was able to get in touch with Mr. Girdhar. So I'm obviously going to mention all his contact details, and if you guys want to organize this tour, do hit him up. The place is situated in the Aravalli range, so you cannot take your regular car. You need a 4x4, which is why Mr. Girdhar is going to pick us up from here. We are going to go via his Thar to the village. Majority of those living in the villages around this area belong to the Meena tribe. The girls of these villages are sent to schools for their higher studies through sponsorships and income generated through village visits. We've made a army of friends here. The mother has come. We'll go to the village now. Keeping sustainability in mind, only one group is guided through the village per day. We are quite far up the Aravallis, and this is the fortified gate. Traffic, a little bit of a traffic situation here. After traversing up the long windy roads of Sariska in the Aravalli range, we reach the village, and here you get to meet with your host family. You can enjoy a lovely lunch, and you can also spend the night here if you want to. Reached the village, and we are gonna meet our host family first. Let me introduce you guys to Mr. Girdhar, and he's the one who organizes the village visits.
So please आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को. Thank you very much, everybody. Especially, we express our gratitude towards everybody who has visited so far and who are going to visit our village, because we are doing something like our village girls either drop out or those who want to study further. So it's a kind of sustainable project. So your active participation is really required. Thank you very much. Thank you. Through the village visits, all of the money is contributed towards the education of the girls. So most of them study here till their elementary education. After that, they are sent for higher education, and then through sponsorships, the girls are educated further. Like most of them are sent outside for their college studies. So yeah. तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है. हाँ, तो जैसे रात को स्टे करते हैं तो उनको थोड़ा सा मजा आ जाता है, क्योंकि गांव की जो लोगों का काम है ना, वो थोड़ी सी बड़ा उनको मतलब मन लग जाता है लोगों का. हाँ, तो पानी जाडो करते मतलब मैं पूछ भी थोड़ी भैया. Thank you. हाँ, टिश्यू यहाँ पे ये ऊपर रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा ये वो राजस्थानी कल्चर का थोड़ा सा ऊपर रहता है. ये महाराष्ट्र में जाओगे ना आप, वो नीचे लेते हैं, वो पूरा यहाँ तक लेते हैं. तो वो अपने बाहर ऊपर बैठ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा कि कम्युनिटी का ओवरव्यू मिल जाता है. तो जैसे स्पेशली फॉरेनर्स के लिए तो वो बड़ा थोड़ा सा आगे अच्छा होता है कि यार वो लोग कैसे खा रहे हैं, वो भैंस का दूध निकाल रहे हैं, और वहीं पे एक्टिविटीज हो रही है, महिलाएं अपनी बैठ जाती है. पूरा गांव जैसा ही हो गया. वो पूरा गांव जैसा वो एक्टिविटी है ना, उनको थोड़ा वहाँ पे वो बैठ के वो देख लेते हैं, तो वैसे अच्छा हो जाता है उनके लिए. ऐसा ही फिर जैसे दूसरी फैमिली है उनके साथ भी ऐसा होता है. अच्छा. तो वो जनरली हम उनको ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के अंदर गांव का ही एक कमरा जो फीलिंग्स देते हैं. So people who want to come here and stay, they usually stay in one of these houses with the host family. And yeah, you can get the authentic village experience. So this is a custom here that the son has to shave the father's head. I'm zooming in too much, so I don't know how the clarity about the picture. So this is where the bonfire and everything happens. And this is Namaste. So where the son shaves the father's head. Tallest dog I've seen in my life. There are some ladies, I don't know if I can ask them for picture, but let me ask. A stroll around the community area. We are waiting for a chai. And also the Aravali range there, that is like tiger area. So the tiger comes, and tigers usually mark their territories by peeing so that leopards don't come. Because if leopards come, they usually steal the cattle and dogs. So they're happy, the community is usually happy that this area is marked by tigers as opposed to leopards. But leopards do come here at times and steal their dogs. Okay, this is the kitchen. जिन्हें मैं जूते पहने हुए तो this is the... Thank you. We'll enjoy a cup of tea and then go for a visit around the village. Very nice tea. Amazing. बहुत अच्छी चाय बनी है. This is the Neelkanth temple. पहला नहीं, वो तो उसकी रूसी रानी की कहानी है. अच्छा. वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन पहला तो नीचे वाला जो टाउन है ना, वो है. This is powered by solars everywhere. Like most of the irrigation and farming is done through the solars. And some family have a little bit of solar installed just for the sustenance. This is maintained by the Archaeological Survey of India, the Neelkanth Mandir. ये क्या है? ये कोई... हाँ, ये बहुत अच्छी बात है. सभी पूछते हैं. मैं आपका वेट ही कर रहा था एक्चुअली. आप ही पूछेंगे जरूर. एक्चुअली क्या होता है, मतलब जो गांव के छोटे देवी देवता होते हैं ना, एक तरह से जैसे अपने ब्रह्मा विष्णु महेश तो बड़े देव हैं.
तो इस तरह से जो छोटे देवता होते हैं तो उनके, या फिर गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो उनकी यहाँ पे उनकी मेमोरी में दीपक जलाए जाते हैं। अच्छा, तो ये उनको भोग लगाया जाता है। ओके। तो उनको देवता बोलते हैं। कुछ अपने पितरों की भी पूजा टाइप में करते हैं, लेकिन ये पितर नहीं है, लेकिन Okay. उस तरह के देव हैं ये। अच्छा, तो उनकी मतलब दीपक जलाए जाते हैं, वो चीज़ है। ओके। वही जगह तो कुछ सुंदर नहीं है वो क्या मंदिर का ही पार्ट है। हाँ, वहाँ चलेंगे अपन। ओके। वहाँ तो उसी से लाया हूँ मैं, वहाँ पे आपकी एक फोटो लेंगे। अच्छा, बड़ी सुंदर फोटो रहेगी आपकी। ठीक है। इतनी वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे आप। वो जगह ही बहुत अच्छा है। नहीं, वो जगह है, वो अपीलिंग है वो। हाँ, वहाँ पे एक वो क्या था, ऐसा ही मंदिर था पहले, बड़ा सुंदर मंदिर था वो। लेकिन हाँ, वो जब औरंगजेब का जब हमला हुआ था ना, उस टाइम तोड़ दिया गया था। इसलिए टूटा फूटा हाँ, वो अभी रूइन की फॉर्म में ही है, लेकिन वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन्ड है वो। आ जाइए। these beautiful sculptures on the pillars. आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, मतलब हाँ। रिनोवेशन के अंदर तो सीमेंट कंक्रीट टाइप की चीज मिलेगी, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ये सेंट्रल पार्ट है टेम्पल का, इसमें केवल पत्थर को दे हैव फिक्स्ड इनटू ईच अदर इन पर्टिकुलर फैशन। तो इसमें सीमेंट कंक्रीट ग्लू का काम नहीं था पहले, इसलिए आज 1000 साल के बाद में भी ये मौजूद है। ये So पत्थर सारे ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे या कार्विंग? नहीं, कार्विंग नहीं है। जैसे पत्थर को जॉइंट करके बनाया हुआ है, मतलब पत्थर को पहले बनाया सा, और फिर एक दूसरे में फिक्स कर दिया उसको। अच्छा। तो ये पूरा एक तरह से कार्विंग नहीं है, जैसे ये यहाँ पे अलग है, ये पार्ट अलग है इसका, यहाँ से नीचे का। अच्छा। फिर ये वाला पार्ट अलग है, फिर उसके बाद में वो ऊपर वाला पार्ट अलग है। ओके। तो इसी वजह से इसकी उम्र ज्यादा है। अच्छा, मंदिर बहुत कम है, लेकिन जो है ना वो अभी तक भी मौजूद है। अच्छा। वो टूटते कम है, क्योंकि उसमें सीमेंट तो होता नहीं, वो कमजोर पड़ता नहीं, वो केवल पत्थर होता है, इसलिए उसकी एज ज्यादा होती है। जो पांडवों ने जब बनाए थे ना, तो विराटनगर में जब रहे थे ना, वो यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, तो जब विराटनगर मतलब वो नेपाल का विराटनगर? नहीं, वो विराटनगर जिसमें राजा विराट के यहाँ पे इन्होंने अज्ञातवास बिताया था। मत्स्य नरेश जो थे। अच्छा। तो हमारे जैसे बसों के ऊपर देखेंगे ना, तो मत्स्य नगर आगार लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो वो मत्स्य नगर वो राजा विराट वही थे। अच्छा। तो उनके यहाँ पे जब वो रहे, तो उन्होंने उस टाइम वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि आप है ना एक काम कीजिए कि आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे यहाँ पे 7 शिवलिंग बनाइए। तो उन्होंने वो 7 शिवलिंग बनाए यहाँ पे। अच्छा। बाद में उनको प्रतिहार राजाओं ने उनको रिन्यूएट करवाया। जो मंदिर आप देख रहे हैं वो प्रतिहार राजाओं को बनाया, अच्छे से बड़ा करके बनाया। ये कहानी है यहाँ की। ये जो जितने भी आप अच्छा आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना, उसकी ये कहानी है। अच्छा। आइए वो, और उसकी ये जो बावड़ी है ना, इसकी भी अलग ही कहानी है। इसमें क्या है कि इसका पानी नहीं सूखता है कभी। गांव में सब जगह गर्मियों में पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ नहीं खत्म होगा। अच्छा। पता नहीं उनके पास कुछ ऐसा था या उन्होंने ये पॉइंट चेक करके कैसे बनाया, वो जाने। लेकिन फिर उसके बाद में इसको रिन्यूएट किया गया कई बार। अच्छा। तो अभी आप देखेंगे तो इस बावड़ी से जल लेके और इन शिवलिंगों के ऊपर जल को वो चढ़ाया, शिव जी का जलाभिषेक किया गया। हाँ, तो ये इसकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और बहुत लोग मतलब अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये शिवलिंग बड़े अच्छे मतलब मानते हैं कि आपको। भीड़ तो बहुत है। हाँ, भीड़ दिल्ली के लोग जो गांव से पहले कभी जुड़े हुए खूब आते हैं। ये बहुत मतलब पहले, अभी देखो ये थोड़ा सा गंदा है, तो साफ सफाई करने की जरूरत पड़ती है। इवन कि ये पीने में भी काम में लिया जाता है। अच्छा। हाँ, इसको ऊपर से साफ कर लिया जाता है। गर्मियों में जब पानी कभी खत्म हो जाता है, कभी 3, 4, 5 साल में एक बार ऐसा होता है कि पानी गाँव में नहीं है, जैसे मान लीजिए, क्योंकि ऊपर है ना गाँव, तो वो पानी को काम में ले लिया जाता है। और ये पहले की बावड़ी जो बाद में बनाएगी बाद में, तो ये जल अभिषेक के लिए ये जल काम में लिया जाता है। लो आपको दिखा के It's a reservoir system. These are all wheat plantations. यहाँ पे ऊपर कुछ ऐसा छोटा सा किला दिख रहा है आपको। हाँ, वो जब रानी यहाँ पे आई थी ना, अलवर की रानी, when she was not happy with the king, अच्छा। तो वो जब यहाँ पे आई तो उनको बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे गांव में। उस टाइम गांव थोड़ा सा अच्छा था, अभी से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा।
तो उन्होंने बोला कि राजा को बाद वापस जाके कि मुझे वहाँ पे कुछ दिनों रहना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। बाद में उन्होंने अपनी मोस्टली लाइफ यहीं गुजारी थी। तो राजा ने उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे वो छोटा महल बना दिया था और गांव के आप मेन गेट जो बना हुआ है अच्छा, वो बनवा दिया था। तो मेन गेट और ये जो बाउंड्री वॉल ये जो है ना गांव के बाहर जो आप अभी इधर देख सकते हैं, जो इधर वाली ये बाउंड्री वाल है, हाँ ये तो अभी 600-700 साल हुए हैं इसको। बाकी सारा लगभग 1000 साल से ज्यादा पुराना है। और प्रतिहार राजाओं ने बनाया था इसको, ये जितने भी जो शिवलिंग वगैरह जो बाद में रिनोवेट करवाए थे। तो आप जब भी अभी ये जो स्ट्रक्चर है ना इसके पास जाएंगे ना तो आपको सारे दूसरे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे फिर, अच्छा। फॉर्म में है। और पुराने मंदिर वगैरह किले वगैरह जो हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पुराने टाइम में कितना अच्छा रहा होगा। तो उसी से नाम आया रूसी रानी। हाँ, रूसी रानी इसलिए आ गया क्योंकि वो जो रानी मतलब उससे राजा से रूठ गई थी ना। हाँ रूठना तो राजस्थानी में रूसना बोलते हैं। अच्छा। तो वो रूठ गई थी तो उसने बोला कि मुझे आपके पास नहीं रहना है, तो मेरे को गांव में रहना है। अच्छा। बाद में फिर उनको गांव अच्छा लगा और राजा से तो वापस वो राजी हो गई। हाँ। लेकिन वो गांव में रहने लगी तो जब नीचे कम्युनिटी में लोग सोचते हैं यार रानी इतना क्यों रहती है, वो अलग में मतलब बाहर वहाँ क्यों नहीं रहती राजा के पास। तो इसीलिए उनका नाम हो गया ऋषि रानी। इसलिए वो ऋषि रानी उसका नाम निकाल दिया। It's completely fortified by walls, and this is the alternative history of this village and the area around Sariska Tiger Reserve. Also have carvings. देखो जो मैंने बताया था ना आपको कि जो स्टोन्स को वो एक दूसरे में फंसा के यूज करते थे। अब आप देखिए यहाँ से नीचे स्टोन्स है, केवल स्टोन्स है, कोई सीमेंट वगैरह नहीं है। उसके ऊपर वो सीमेंट है। हाँ। उसकी अलग कहानी है, जब आप उधर जाओगे तो आपको पता लग जाएगी। लेकिन ये ऐसे स्टोन्स को एक दूसरे में फंसाने की वजह से और सीमेंट न यूज करने के कारण ये इतना लंबा चला। अच्छा। ये ज्यादा सस्टेनेबल होता था। और ये है ना, ये क्या किया बाद में जब फिर दूसरे यहाँ पे किंग्स वगैरह का जिनका इफेक्ट हुआ तो उन्होंने फिर अपने अपने हिसाब से वो मूर्तियां लगा दी। तो ये मूर्ति अभी रिसेंटली लगाई हुई थी 600-700 साल पहले। अच्छा। हाँ, अदरवाइज ये पुराना स्ट्रक्चर है। तो अभी वो जो नई मूर्ति लगाई हुई है वो आपको दिखेगी। So most ancient historical sites, if you notice, most of them have actually these giant rocks that are placed together, which hold structure. A lot of ancient sites actually carry the same phenomena, where the rocks are stacked on top of each other and joined together, and that is how they are maintained for so long. There's even these carvings on stones. This is legit like I'm standing and walking amidst history. Honestly, it feels like I've traveled through time back in the ages, back in the ancient and medieval ages. The Nilkant temple, constructed between 6th to 9th century, also houses a tall sculpture of the 16th Jain Tirthankar Shantinath. Standing a few meters away from the Nilkant temple complex is the Naugaza Digambar Jain temple. This gives a glance into the religious dominance of Jainism in the past around the region of Alwar. Currently, majority of the population in these villages follow a mix of animism with the traditions of Bhakti movement and shamanism, where they worship nature while also singing praises of their beloved gods and goddesses, exemplifying their deep devotion towards them, along with other spiritual practices as well as worshipping their cattle and other forms of nature. यही देखिए, आप अपने पीछे देखिए, एक पीछे इधर मेरी तरफ आइए थोड़ा सा, यहाँ इस जगह से, और वहाँ पे एक पीछे देखिए, वो है। हाँ। और एक उसके बाद में ये देखिए इधर, ये वो शायद वो देखो उधर वो मकान है, उनके साथ में 4 पिलर्स है, शायद वो पता नहीं आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ा कोहरा है। हाँ। हाँ। और बाकी ये है। इस तरह से देयर आर 354 स्ट्रक्चर्स। अच्छा। तो उससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि ये कितना रिच कल्चरल हेरिटेज उस टाइम का भी रहा होगा। Right. तो अभी which are in forms of ruins currently, and they are under archaeological survey of India and under protected monuments. तो कहने का मतलब ये है कि भाई इससे एक अपने को एक पूरा आइडिया लगता है कि
गांव का कल्चर, गांव की चीजें, ये अपने आप में यूनिक थी, अच्छी थी और अभी भी अपीलिंग है. Post our stroll through Nilkant Temple, we sat down with the women of the village in their community kitchen. This is where everything comes alive. The women sit here, share stories about their day, and cook food. This is where I sat and I was speaking to the women of the community, and they were asking me about my tattoos. Quite amazed to know that I just did it for fashion. They also wanted to know if I was married or not. So yeah, I loved the curiosity, to be honest. Raju prepared a simple but very satisfying lunch for us. This is makke ki aate ki roti, which is maize flour, and this is, I think, aloo gobi and tinde lauki की सब्जी. शायद टमाटर है. टमाटर लौकी. तो उन्होंने तोड़ लिया होगा. यहाँ पे घी ज्यादा यूज होता है या वो सफेद मक्खन? घी कम. भैंस पर रखते हैं तो घी खाएंगे. अच्छा, नहीं वो घी में और मक्खन में पूछ रहे हैं. मक्खन ज्यादा यूज होता है. घी को फिर वो क्या करते हैं, यूज तो मक्खन ही करता है वो, लेकिन घी प्रिजर्व करके रख लेते हैं फिर वो. तो जब भैंस कंटिन्यू नहीं रहेगी ना, वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो फिर वो उस घी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मक्खन तो प्रिजर्व नहीं किया कर सकते हैं, वो तो खराब हो जाएगा. Everybody who comes in the village, it's a tradition to give something from the village. Okay. So it's a kind of a very very little gift. That is very sweet. ये मतलब सिला मैं अब यहाँ की लग रही हूँ या नहीं? माँ खुशी सही को लगी. ऐसे बोल रहे अच्छी लगी कि नहीं लगी? अच्छी लग रही है. बहुत सुंदर है. बहुत सुंदर. चलो, then this is the hookah. It's a huge community affair. So once you make the hookah, you have to offer it to the oldest person in the village first, or whoever is the oldest person is sitting with you at that moment, and then it passes along hierarchy wise. Like there's a hierarchy according to age. So, and it brings the whole community together. So this is how it is. Namaste. So yeah, this is how it is. नहीं ठीक है. And it's also like both genders, like women and men also, they do it together. These kids are also busy in their own world. Such a fun visit, and I'm so sad I don't want to go. I would love to see this community fire going on in the evenings, but unfortunately not this time. But it was so nice. I really don't want to go. Like, the people are so sweet. So yeah, but it's time to bid adieu, and it's time to head off towards newer adventures. So please, so if you guys like this video, do not forget to hit subscribe and share this video and let people know about this place. And of course, if you want to visit this place, do not forget, oh, there are some goats coming my way. To visit this place, please make sure that you connect with Mr. Girdhar first, and do not just head here. You connect, make plans, and allow him to organize the whole trip before heading here. So yeah, I hope you guys like this video, and please do support this channel, and that is how I'll be able to make more such videos. With the cattle returning home, I knew it was time for us to head back to Jaipur as well. With a heavy heart, I said goodbye, but I promised that I would be back to spend the night the next time. And I cannot wait for that to happen. To sit with the locals, enjoy a bonfire, maybe take a drag or two of the hookah, who knows. I cannot wait to be back here and fully embrace the village life. As of now, I will be back with adventures from Jaipur next. So stay tuned for that. And you guys know the drill. If you like this video, do not forget to hit subscribe, smash on the like button, and tap on the bell button to be notified each time I post a video. Bye. See you in Jaipur.